All right, before we get started, let me do a quick introduction of myself. My name is Rakesh. I have been associated with FCKS over 10 years now, almost. I have been training people on starting with Excel, VBA, Power BI, SQL, Python, RPA, SFDC, and some other tools. Right? These are the tools I have been training people on. Currently, I'm working with a multinational company, uh, leading a team of data science and data analytics focused on different part of organization, which includes sales, finance, marketing, human resource, and operations. Okay, that's a little bit about me. I have total 17 plus years of experience, and I have started my career as a MIS executive with a very small company, and from there I have in a position where I am leading a team of around 30 individuals. So that's a little bit about me. Before we get started, here is a quick question: which language is most preferred? Okay, you can answer by unmuting yourself, or you can just type a message in your window and say which language is preferred. I can speak many languages. I can speak Hindi, English, Marathi, and Gujarati, and few more languages. But let's select between Hindi and English, which is the preferred languages. Or if you want to mix it, we can mix it as well. Please use chat window to suggest, or you can unmute and say yourself. Okay, Jalinder is saying English, and look, there's no pressure about any language, right? Whatever language you prefer is okay. थैंक्स जलिंदर फॉर बीइंग फर्स्ट टू रिप्लाई. और कोई लोग हैं, कौन सी लैंग्वेज आपको पसंद है, हिंदी या इंग्लिश? कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए क्लास के लिए? सिर्फ जलिंदर का ही प्रेफरेंस है, बाकी लोग? Okay, रूपाली, एनीथिंग इज फाइन. ओके, अमित इंग्लिश. तानाजी, चैतन्य, सिमरन, सुलभा, श्रीकांत, गणेश, आप लोग का क्या प्रेफरेंस है? ओके, लेट्स डू वन थिंग. हम लोग, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया है. आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. लेट्स डू इंट्रोडक्शन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द पर्सन आई सी फर्स्ट ऑन स्क्रीन, तानाजी. कैन वी स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन? Yeah, hi, I'm so sorry. I was not audible. Am I audible? Yes, you are audible now. Yes, go ahead. Just a little bit Yeah, hi, about my name is yourself, Tanaji More. and Sorry? just a little bit about yourself and why you want to join the class. Two things. Yes. Sure. So, hi, good morning, all of you. My name is Tanaji More. So, currently I'm working with Summer Technology, one of the IT company. And currently I'm handling over there as I'm working over there as a Power BI developer, and I'm handling entire MIS team. So just I was I joined this class because I want to learn the SQL in in a deep. I want to get the entire deep knowledge of the SQL. That's why just I'm over there. Thanks. Okay, perfect. Thanks a lot, Tanaji. Amit, you are the next one on my screen. You want to go next? Sure. So, good morning everyone. My name is Amit Jagtap and I'm working as a Power BI developer. So, reason for me to join this SQL classes to enhance my skills, as SQL is very important these days, means it is required everywhere. So, it's essential to get knowledge of SQL. That's the reason. Okay, Thank you. Very good, Amit. Do you know who all are using SQL at the moment? तो SQL अभी कौन यूज कर रहा है? अमित, any idea? Who all means I didn't get you. Which all roles or job categories are using? Yes, in data analysis it is mostly required. Okay, so I'll tell you some of the examples. Right? Data analysis, of course, it is must. Then there are developers, any kind of developer. You take data scientist, or you take Java developer, you take
Android developer, you take web page developer, you can take software developer. All of them are using SQL to access the data. And the reason behind is all the data that is coming are getting stored into RDBMS. Okay, and if it is not getting into RDBMS, getting stored into in a way that it can still be accessed with a normal SQL itself. Alright, so it is one of the most used language and one of the thing that is like uh, I would say has become staple. Right, people don't talk about it, but it's very important. All right, thanks, Amit. Rupali, you are the next. Yeah, myself Rupali Supe. I'm working as a document automation developer in Document Agility. It's small company, it is like startup, and I wanted to learn SQL because upgrade myself and enhance my skills. Okay, perfect. Thanks a lot, Yeah. Rupali. Yeah. Chaitanya? Chaitanya, you're on mute. Chaitanya, if you're facing any issues, you can just type in the message that you're facing challenges. We can go to the next person then. Okay, Chaitanya seems to be on unmute but unable to hear you yet. Okay, Chaitanya will move to Simran, then we'll come back to you. Okay, try to figure out if you are facing any challenge with the mic. Simran, could you please go ahead? Hello, sir. Good morning. Good morning, Simran. My name is Imran, sir. I have done MBA in finance recently, and Mhm. I know a little bit about SQL. That's why I come here. Okay, all right. Welcome to the class. Sulbha, Yes. Yes, how are you? fine. All right. Just a little bit about yourself for the larger audience, please. Sulbha, you're on mute. Yes. My name is Sulva Vinod Jamkar. I completed in my BCS. Yes. I don't talk in English with properly and very good. I don't like. I It is okay. We all are yes. learning, so nobody हाँ. is. I just I prefer Hindi language So talking. हिंदी में बोलिए सुलभा, it's okay. Yes. आप हिंदी में बताइए अपने बारे में. कोई बात नहीं. मेरा नाम सुलभा है. मेरा बीसीएस कंप्लीट हुआ है अभी 2-3 साल हो गए. अभी मैं हाउस वाइफ हूँ. Okay, हाँ. perfect. और मुझे अभी जॉब के लिए देखना है इसलिए मैं एसक्यूएल का देख रही. 2-3 साल से ट्राई कर रही हूँ. अभी अभी मौका मिला है तो कुछ तो कर जाएंगे ऐसा लग रहा है. Perfect, perfect. Welcome to the class, Yes. Sulbha. Thanks a lot for Yes. introduction. Okay. Chalinder? Rakesh, am I audible? Yes, you are. You are. Absolutely. Yeah. My name is Jalinder actually. It's my name. So, lots of people are unable to pronounce it. So that's why I thought I should. I'm sorry. Thanks a I mean, lot. it's okay. It's okay. If you call me Jalinder, that is okay. I mean, that happens with me. I'm habitual. And about my professional curriculum, I was working with Vodafone as an assistant manager. Now I'm working with Infosys at level 4, that's lead level. And actually, I have conceptual knowledge, very well conceptual knowledge about SQL. I have been practicing SQL on hackers ranking and all those stuff. But I mean, even I would like to. I know. I think we had a word when I mean, it was like before COVID or something like that. Uh-huh. Even I had visited so many times to AFC case, and even Raza is, I mean, Raza is familiar with me, and I had spoken with you. Like it's just like formal chat. But then again here, I'm sorry guys, I'm going to take your times as well.
So my planning is to join Python and SQL. Okay. So what do you think? What should I prefer first? That shall I go with SQL first or shall I go with Python first? I have good knowledge of VBA. I mean, I am working as an automation lead. I can automate lots of things like PDF, Outlook, Excel is like, I mean, that is, if we are doing automation on VBA, Excel is like compulsory. So apart from that, that is what I mean. I have good, like, I have understanding of SQL. I have been practicing like W3 school, hackers ranking, and all those stuffs. Mm-hmm. And I have knowledge of VBA, and I have like done like 5 to 10 project on VBA as well. So what do you think? Shall I go for SQL? Shall I go for Python first? I mean, even though I mean it's like I have to go for both. That's clear. Then Mm-hmm. what should I choose? Okay. So Jalinder, it's basically on your requirement, but here is based on what you said so far, right? You know VBA, excellent. You know a little bit about SQL. You said you're already been practicing. This course will Yeah. help you perfect it, right? Python, I don't know if you're touch based on yet. So probably start on yourself little bit on Python and then go for Mm-hmm. Python. Python is extremely uh, complicated to start and understanding with. SQL probably is easier because you can still relate it with Excel easily and VBA very easily. Uh, And one more thing, are we going to take it on like Access database or are we going to install Microsoft SQL on our laptop? How is it going to work for us? Like, so at the moment in demo, I'm going to use Access because it's easier to do. Then based mm, on as we progress, we'll have both SQL Server and MySQL. mm, And mm, in many cases, some of us will not have laptop capable enough to manage SQL Server, right? In mm, that mm. case, we'll use an online version of SQL Server, so we understand the coding and concept. Yeah, that is what, because see what has happened, like my laptop is also old one. You can see, I mean, today I have joined on the Yeah, mobile. So like that's why I thought I should ask you. So at least for until next week, I yeah. should be ready with my set. So So mostly, I mean, we'll be test using an online version, Jalinda, which is it. as simple as using YouTube. So if YouTube works on your No, laptop, online version, I it know. should Online work. version, I know. I mean, I have Okay. registered over there for Oracle and SQL Server, so I know. Perfect, perfect. So, So we'll not. We are going to work in a light way that I understand that a lot of people will not be able to even have very good computer or very powerful computers at their places. So we'll make sure that we use the lightest version or the easiest version as possible. At the moment, I'm going to use Access for demo, but as we start, I'll introduce you with a web-friendly version where we can use all seven kind of different databases. We'll focus on two, MySQL and SQL Server, but Oracle and other things are also used. I'll talk about it a little bit when we talk about when we go through our presentation, what kind of SQLs are there. Uh, but all of those I will be think, there. Okay. I think Harpal and you were friends, right? Yeah, Harpal is one of my best friends also. And he is also one of my friends. So that's what I mean. That's what we spoke when I visited to the class. Okay, 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 okay. Yeah, yeah. Okay. No problem. I mean, let's continue because people are waiting. We will, I mean, we will be in the call. So, We'll end so up chatting and taking entire yeah, time. yeah, we will All speak right. personally. No, issue. No Yeah, worries. thanks. Thanks. Thanks for Thanks. the. Yeah. Uh, Ganesh. Yeah, hi, good morning. My name is Ganesh Thawan. I joined this class to enhance my skill as SQL is one of the key tool which our company is using. I want to enhance my. I have joined this class as a blank slate. I want to go with lot of stuff when the class will tenure is finished. So that's all from my side. Thank you. Okay. Perfect. Perfect. Most welcome, Ganesh. Ahmed. Ahmed, you're on mute. Yeah, you're on mute. Hello. Go Hi. ahead. Hi. Yeah, you can hear me? I can hear you now. Yes. Yeah, hi. So this is Ahmed here, and I I had a master's degree after an Uh-huh. MBA, and I want to get into data analytics. Okay. Perfect. Yeah, So that we'll is start with the SQL. reason I want to join this scheme.
SQL. Most welcome. Chaitanya, are you able to unmute and speak, or you're still facing issue? Okay. Chaitanya seems to be still facing issue. No worries. We'll get started with the small presentation that I put together for all of you. Okay. Can you see it? Yes. Okay. Perfect. So the course that you're looking at is Mastering Structured Query Language. Okay. If you have any question, please feel free to interrupt and ask. बिफोर वी गेट स्टार्टेड अबाउट द कोर्स, हम लोग कोर्स शुरू करने से पहले थोड़ा एफ सीकेस के बारे में जानते हैं. विल अंडरस्टैंड अबाउट एफ सीकेस एडवांटेजेस बिफोर वी गेट स्टार्टेड. Okay, so there are a lot of advantages about FCKS, but before I ask or deep dive into it, do you have any question? How many of you have been with FCKS before? How many of you studied at FCKS before? Me, Rakesh. I was part of advanced Excel and VBA. Perfect. And even I did like that Power Query, but that didn't work for me. No worries, no worries. All right. Anybody else was? Yeah, even I joined. Okay. Yes. Even I joined Pankaj Excel classes. Okay. Yeah, advanced Excel. Perfect. Rupali, you? Yeah, I did Power BI course from the FCKS Awesome. last year. Yeah. Awesome. Amit, I'm sure you are. Yes, I have done Power BI and I have enrolled myself in Power Automate. So ongoing. Awesome. Fantastic. Anyone else? Yes, mine is VBA foundation is going on. Yeah. That's it. Okay. All right. So most of you know about FCKS and not. I'll go through it on briefly. FCKS stands for Achieving Freedom by Creativity and Knowledge Sharing. Okay. So FCK is actually an acronym. Our focus is helping to learn and not instructing to complete the courses. Okay, we value your dreams and goals. So anytime you come and say, hey, we want to do this, we want to do that, we make sure that we try to help you achieve that. That's why जब हमने कोर्स शुरू किया या डेमो भी शुरू किया, पहला क्वेश्चन था मेरा कि आप क्यों करना चाह रहे हो उसी को, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू वांट टू डू इट. Okay. All right. The next few more things about FCKs, that our trainers are industry expert and have practical experience in field. All of us are currently working or working through projects, and all of us are at utmost and latest knowledge of what is happening in industry, about what language or what training or what courses that you're going through. So what we do is we make sure first we use the most simplified method to help you understand and learn. And we make sure that courses are designed for everyone and are not limited to only IT, science, and engineering students. Even a lot of engineering students not coming from, let's say, a computer technical background, they should also be able to understand. So all courses are at such a level that you don't face any challenges learning them. We have some job forums, query solving group, where you can look out for jobs. So we have uh, thousands of students in different companies, and they keep posting some of those jobs, and that helps you apply for your dream job looking at that. How most of you say that you're looking for knowledge gain and not actually looking for a job change. uh, but still, if you're interested, you can visit some of those forums. I'll share those links with you once you join the classes. And one of the most important thing is a query solving group. So a lot of you also face queries after completing course, because there are always some new challenges coming up. So you can post your queries in those group. All trainers are there and will help you solve them. You can see some of our videos on YouTube where we are helping students with their queries. Okay. And then there is lifetime support, which basically means we keep updating our courses. I think somebody is not on mute. ID. Jalinder, are you asking question? No, I'm sorry, I was on unmute. I'm sorry, I was speaking with my friend. I'm sorry. No worries at all. No worries. No I'll worries. keep it on there. Thanks. Okay, no worries. All right. So I was talking about lifetime support. इसमें क्या होता है, हमारा जो syllabus है, it keeps updating.
और उसके नोट्स आपको मिलते रहते हैं। इससे आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल, लेटेस्ट जो चीज़ें आ रही है इंडस्ट्री में, वो पता चलती रहेगी। ऑलराइट, और लास्ट फ्यू आर लाइक दिस। जो करिकुलम आप अभी देखोगे सीक्वल के लिए, इट इज़ रिसर्च बेस्ड, डिज़ाइन फॉर योर इंडस्ट्री। सो आप कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको ये सिलेबस काम आएगा। और पूरा जो अपना कोर्स रहेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल अप्लीकेशन। मतलब जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको उठा के आप सीधा अपने कंपनी में यूज कर सकते हो। ओके, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा ज़्यादा आपको टेबल और फील्ड नेम चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये सीक्वल है। बाकी आप डायरेक्टली यू कैन यूज इट इन योर इंडस्ट्री। And the last thing is session needs to be interactive. So I'm going to continue asking you question, probe you, but I also expect from you that you make sure that you are also asking question. Okay, otherwise it will be one way like a video. So you need to make sure that you ask the question. And finally, the course is designed for working professional. So जो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स डिजाइन किया गया। तो यू डोंट हैव टू स्पेंड एनी टाइम बियॉन्ड दीज 3 आवर्स दैट यू स्पेंड इन क्लास। सो क्लास में जो आप 3 घंटे 3 घंटे का जो समय अपना दोगे, उसके अलावा आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन ऑन एनीथिंग आई सेड सो फार? आई विल गिव यू 10 seconds. Okay, we have a student. Hi Prachi. ओके, एनी क्वेश्चन ऑन? हाय, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, बट हमने अभी सिर्फ एफसी के एडवांटेजेस की बात की थी। अभी हम कोर्स के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन। लेट मी आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन, व्हाट इज सीक्वल? सीक्वल क्या है, किसको पता है? आई विल कम टू यू ऑल स्क्रीन। एनीबॉडी, व्हाट इज सीक्वल? एसक्यूएल। काफी लोग इसको सीक्वल प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जो लोग थोड़े ओल्ड हैं, मेरे जैसे मिलेनियल्स हैं, they know it is called SQL. It is called SQL because when IBM launched it very long back, they used to call it SQL because it was written in a sequential manner. कि पहले एक एक्शन करना है, दूसरा एक एक्शन बाद में करना है। That's why it's called SQL. But it's also known as SQL or Structured Query Language. So मैंने बता दिया फुल फॉर्म। So कोई मुझे ये मत बताइए कि SQL का मतलब फुल फॉर्म है। जब आप SQL सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है, वो मुझे बताइए। SQL is used to query the database using DDL, DML languages. Okay, perfect. Data definition language, data manipulation language. So we query the database using SQL. Okay, all right. That's If we want to create the structure of the table or we want to update it, alter it, then we use SQL. Okay, all right. Anybody else? Yep, Rakesh, I would like to take a chance. So what I understood is like for me, I mean, the SQL is like everything as a like language. If you want to communicate with some other person, so if he is not good with Marathi, then we need to speak in English. Or how is like that? Then like the for me, the SQL is a language to communicate with database. So then it comes to query, it comes to whatever update, delete, whatever. So it's like the language to communicate with database. That's what I think. No, very well said. Very well said. It is a language to communicate with database and database application And both. it's into more into the relational database. Yes. That's it. Yes. But nowadays it's also used quite heavily with the other types of databases, right? Which are like Now like unstructured no, databases and others. no, Yeah. yeah, no SQL something like those are concepts are also coming. NoSQL actually stand for not only SQL. So not only SQL, but other languages can also. Yeah, so But SQL is that's what I was talking about. But you know the way There are we so many say concepts. NoSQL, it sounds like the SQL नहीं है, but SQL है, उसके साथ कुछ और भी use कर Yeah, सकते हैं. yeah. I mean, relational database cannot stand without SQL. That's the basic thing. Absolutely, absolutely. All right. Anybody else want to take a shot at what they understand of SQL? What is their thought about SQL? All right. No worries. We'll learn all about it. Okay. So here is a definition.
It's a structured query language widely used with RDBMS, allow user to query, update, insert, delete, allow build relationship and function. Okay, and this definition is more around a part of DQL, data query language. Okay, this data definition language. Like फॉर एग्जाम्पल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, जब आप प्लस से डेटा एंटर कर रहे हो आपको उसके बारे में कुछ और चीज़ें बतानी होती है, राइट? जैसे कि डेटा क्या है, इट्स अ डेट, ओके, इट्स अ नंबर, और इट्स जस्ट अ टेक्स्ट, और इट्स ईमेल एड्रेस, और इट्स अ फोन नंबर, राइट? दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो गो इनसाइड इट, ओके? सो उसे स्कीमा कहा जाता है. सो वी लर्न मोर अबाउट इट, राइट? ओके, कहाँ यूज होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस, वेब एप्लीकेशन, ईआरपी और सीआरएम, यहाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है, बट काफ़ी जगह यूज होता है. अभी हर जगह यूज होता है, किसी भी एप्लीकेशन में ज़रूरत गिरती है इसकी. ऑलराइट, सो ये है आपका सीक्वल. सो लेट्स अंडरस्टैंड देन हु शुड लर्न सीक्वल. सो सीक्वल किसके लिए बना है? Alright, so here are some of the roles that need SQL in their day-to-day life. Analytics, of course, they need SQL. Scientists, that's specifically data scientists, they also need SQL. Data engineers need SQL. Developer, any kind of technology developer needs SQL. Program managers, okay, the people who actually run uh, behind or back the stage to make sure that all the projects are running smoothly, they need it. Administrator, they are not like office admin, I'm talking about business administrator, sorry, not even business administrator, data administrator. They need to understand SQL, and it's very important for them to make sure that the RDBS system are well tuned and performing at its best. ओके, सो ये कुछ रोल होते हैं जिनको सीक्वल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा यूज होता है. इनके अलावा दूसरे भी हैं, but these are more specifically where SQL is must to have. Alright? इसके अलावा एक और आया है जिसे कहा जाता है सस्टेनेबल इंजीनियरिंग. सस्टेनेबल इंजीनियरिंग इज अ टर्म वेयर आपके जो एप्लीकेशन सिस्टम, डेटाबेसेस, ईआरपी, सीआरएम, ये सब है, उनको जो मेंटेन करके रखता है उनको कहा जाता है सस्टेनेबल इंजीनियरिंग. वहां पे भी ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. ऑलराइट, एनी क्वेश्चन सो फार? Okay, we have one more student joining is saying, okay, हाय शशिकांत, आपने लेट ज्वाइन किया है बट ये सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है तो आप उसको बाद में देख पाओगे. ऑलराइट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो सीक्वल किन लोगों के लिए यूजफुल होता है ये हमने देख लिया. वी अंडरस्टूड फॉर विच ऑल रोल सीक्वल इज important. Let's go a step ahead and understand why should you learn SQL. Okay, SQL सीखने की जरूरत क्या है? आप में से कुछ लोगों ने बताया कि नॉलेज गेन करने के लिए एंड अदर थिंग्स, बट लेट मी टॉक अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल अबाउट इट. ओके, नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है, बट उससे इंपॉर्टेंट होता है उसको यूज करना. ओके, सो सीक्वल जो है, ये जो रोल्स मैंने दिखाए जिसमें से एक आपका फ्यूचर रोल हो सकता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं चलता है. इट्स अ पाथ फॉर डेटा साइंस. सो आपको अगर जो डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सीक्वल आपको डेटा अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. एक बार आपने सीक्वल मास्टर कर लिया, आप डेटा में भी एक्सपर्ट हो जाओगे. आफ्टर दैट इट्स वेरी इजी टू लर्न. Okay, it's one of the simplest and most easy to learn language I have ever seen. It is even easier than VBA and probably HTML as well. It has a wide application. बहुत सारी जगह यूज होता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं. It help you reduce turnaround time, right? अगर जो आपको SQL आता है, it will help you a lot to save time rather than doing it with other languages like let's say Python or VBA. You can use SQL and do a lot of things faster. It will help you increase accuracy as well because data जो है आप जो extract करोगे वो standard method से करोगे. So it will help you increase accuracy and save time and money because आपकी accuracy बढ़ रही है, टाइम reduce हो रहा है, so cost saving होगा. It will help you progress in career and okay, last वाला छूट गया.
बी मोर एम्प्लॉयबल. सो जब आपके रिज्यूमे में आप ये होता है कि आपको सीक्वल समझ में आ रही है, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर मोर रोल एंड एलिजिबल फॉर मोर रोल. एनी क्वेश्चन ऑन दिस सो फार? कोई सवाल है इसमें जो हमने अभी कवर किया? आई एम कवरिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, सो इफ समबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट आस्क. अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए. कोई पार्ट है इसमें का नहीं समझा? एनी क्वेश्चन? आई गिव यू 10 seconds. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. Is it important? श्योर, गो अहेड, गो अहेड. Yeah, I have a question. Yeah, is it important to have the knowledge and understanding of VBA, like to learn SQL? Not really, no, not at all. Or we can start as a fresh. Yeah. I Even mean, if you just I have know, no knowledge. I don't know anything about. it doesn't matter. You don't need to know any language. You don't even need to know Excel. SQL is as simple as speaking Yeah. English, and I'll give you example when we go to demo. All right? Okay. Chali. Any other question? Sure, let's go. All right. Let's move on a little bit. Okay. Now let's talk about what will you learn. Okay. I'm sure you all are thinking about it. Okay. Some of our friends are talked about DDL, DQL, and DML. So let's understand. So you learn 3 databases: Access, MySQL, SQL Server. So you learn how to query these databases. We are not going to go into administrative part of it. Okay. So you'll understand how to query it. Then you'll learn DDL. DDL is data definition language. So इसके अंदर क्या होता है, ये आपको जो आपका डेटा है उसका स्ट्रक्चर समझने में और उसे बनाने में हेल्प करता है. सो DDL हेल्प यू define the structure, create, alter or delete database and tables. It also helps you establish relationships. Okay. अभी किन्होंने ज्वाइन किया है? So I guess Monica, you joined a bit late, but this session is recorded, so you'll be able to go through the recording. But if you have any question, please feel free to ask at any time. Okay. Thank you. Hi. We're currently talking about what is included in this course. Okay. So इस course के अंदर you'll be able to learn through 3 different databases which will help you understand this course or master how to query these databases. Access, MySQL, SQL Server. Access पे हमारा focus बहुत कम रहेगा because वो ज़्यादा use नहीं होता है, but it is easier to access for most of you. That's why it is here. Our focus will be more on SQL Server and MySQL. Okay. और ये जो है प्रोग्राम्स हम लोग ट्राई करेंगे कि हमें इंस्टॉल ना करने पड़े. बिना इंस्टॉलेशन ही हम ऑनलाइन तरीके से इसको सीखने की कोशिश करेंगे इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट. बट हम लोग ये भी देखेंगे कि इसको इंस्टॉलेशन कैसे करना पड़ता है. सो यू एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है, स्टार्ट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं. उसके बाद हम लोग इसको ऑनलाइन तरीके से, वर्चुअल तरीके से यूज करेंगे. Okay, the other thing we talked about is DDL, data definition language. This is the thing you will learn which will help you define or create databases, tables, alter them, delete them and all those things. Okay, this is one of the basic block of SQL. Then we'll learn DQL. DQL is one of the most important thing that you will use in your day-to-day life. DQL जो है यही आप सबसे ज्यादा यूज करोगे. इसे कहा जाता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर सिलेक्ट, फिल्टर, सॉर्ट, ग्रुप, अपेंड, मर्ज, प्योर टेबल, सब क्वेरीज, ये सब आ जाता है. ओके. उसके बाद में आता है DML, जहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन, जिसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहा जाता है, जिसके अंदर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप आता है, जिससे आप डेटा मॉडिफाई कर देते हो. जो आप डेटा जिसके अंदर आपने टेबल के अंदर ऑलरेडी डाला हुआ जो आपका डेटा था, यू कैन मैनिपुलेट दैट डेटा, right? And the fifth one is some of the things that you will need to be called an expert of SQL, which is stored procedure, function or UDF, CTAS. किसी ने CTAS सुना है? CTAS. Okay.
सीटा स्टैंड फॉर क्रिएट टेबल एज अ सिलेक्ट. सो वर्चुअल टेबल्स कैसे क्रिएट करना है, कभी आपने डेटा अगर जो फिल्टर करके निकाला तो उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सीटास में कवर होता है. देन सीटी होता है डेटा हैंडलिंग होता है. तो ये सब कवर होगा ये सिलेबस में. कोई क्वेश्चन कोई पार्ट है जो आप पूछना चाहते हो कि सर ये कवर होगा या नहीं होगा? ओके, मैंने लिस्ट तो दी है यहाँ पे. हेलो. या बोलिए बोलिए. या मैं बोल रहा था ये टीसीआर एंड टीसीआर बात करने वाले हैं कोर्स में. सॉरी आपका डेटा वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन डेटा. सॉरी आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हुआ. ताना जी बोलिए. ये एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा हूँ. सो एक्चुअली मुझे पूछना था आप टीसीआर और डीसीआर कवर करने वाले केस में. Okay, so transact control language and data control language, right? उसका जो यूज है वो कुछ स्पेसिफिक जगह होता है. हम लोग उसका ओवरव्यू करेंगे बट विल नॉट गो इनटू डिटेल फॉर इट. ऑलराइट. एनी अदर क्वेश्चन? Hello. हाँ बोलिए. Actually, I want to know like what is difference between PostgreSQL and MySQL. Okay, they are just so similar is what difference between Firefox and Chrome browser, right? They are database software or RDBS software provided by different companies. So what will happen is some of the command, okay, will be different, will have some additional feature compared to each other. They're just competitors, so will have some different feature, but otherwise mostly it will be same. SQL is a standard language, okay, and it is monitored by a community called ASCA, if I'm not wrong. Just let me quickly tell you the name. Okay, so there is a community or organization called ANSI, which is American National Standard Institute, and then there is something called ISO, International Standardization Organization, or ISO. You would have heard about it. So SQL language is governed by them. So they make sure, or they are the one who will help standardize SQL language across all the different products. Okay, SQL Server, MySQL, PostgreSQL are basically products. Okay, and SQL is a language. That makes sense. Okay. That help you understand a little bit. Yes. Yes. Okay, we'll talk more about differences because we're going to cover them, and I'll probably highlight for you some other softwares as well which are not listed here. But very Okay. good question. Any other question, anyone? Alright. If you have any other questions also, please feel free to unmute yourself and ask. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और. अच्छा, अभी why you should learn now? अभी क्यों सीखना चाहिए हमें SQL? Why we should not learn it like another after 6 months or something? So let me ask you a very random question. How many of you decided to learn about SQL last week? See, यहाँ पे एक है ना हैंड्स अप करने वाला एक आइकन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका हाथ ऐसे ऊपर हो जाता है. सो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट वीक डिसाइड किया कि SQL उनको सीखना है? ओके, कोई नहीं है. राइट. कितने लोग हैं जिन्होंने 1 महीने पहले डिसाइड किया था? ओके, गणेश ने हाथ ऊपर किया. गणेश, आपने लास्ट वीक डिसाइड किया था? यस सर. ओके, ऑलराइट, आप हाथ नीचे कर सकते हैं. कितने लोग हैं जिन्होंने 1 महीने पहले डिसाइड किया था कि SQL सीखना है, या सोचा था कि SQL सीखना है करके? कितने लोग हैं जिन्होंने 2 महीने पहले सोचा था? देखो, काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग सोच के रखते हैं कि मुझे SQL सीखना है, राइट? हम लोग, जलिंदर ने 2 महीने पहले सीखा. Okay, मैंने बहुत 2 साल से ट्राई किया. सो काफी बार ये हो जाता है कि हम लोग सालों से ट्राई करते, सोचते थे कि आज SQL सीखेंगे, कल SQL सीखेंगे, बट उसमें क्या हो जाता है, ट्रेन छूट जाती है. तो काफी बार क्या होता है, अगर जो
अगर जब आप टाइम पे नहीं सीखते हो सो काफ़ी बार आप पीछे रह जाते हो। सो अभी क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि अभी भी डेटा बूम चल रहा है, रिक्वायरमेंट टू डीग एंड मैनेज डेटा इज इंक्रीजिंग। डेटा इतना बढ़ गया है कि उसको मैनेज करना, उसको डीग करना मतलब एक्चुअली क्वेरी करना और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू मस्ट हैव पीपल हु कैन मेक सेंस ऑफ डेटा, and SQL is one of the tool to make sense of data. Okay, and as data is increasing, demand for these people, data analysts, data science, is also increasing, and there is always a risk of lagging behind, right? I'm sure some of you are inspired by your friends who has learned data SQL and got one of the dream job they are looking for, and you are also hoping to get something similar, right? So this is the reason why you should learn now, and of course it will help you take a step towards your dream career. Okay, so this is why you should learn now let's look at SQL in action. Okay, हम लोग अभी SQL queries कुछ ट्राई करेंगे और मैं अभी बहुत बेसिक आपको बताने वाला हूँ और मैं इसे एक्सेस में बताने वाला हूँ. ओके, एक्सेस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड आई वुड से most light SQL tool. Okay, most light database tool basically. Alright, so हम इसके अंदर कुछ queries ट्राई करेंगे और मैंने बोला था आपको कि ये जो है SQL जो है it is as simple as speaking English. Okay, so let's see why it is so. So यहाँ पे मेरे पास में कुछ cells का database है. So ये मेरे पास में database है. यहाँ पे headers है. There are lot of rows into it. If you see here, there are 9,994 rows. All right. So let's see how we use it. So I'm going to go to create on this and going to say query design or query wizard, whatever you want to say. We'll just click on SQL here, so it goes away. यहाँ पे एक view होता है. ये व्यू वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा जब क्लास शुरू होगा. अभी हम यहाँ पे गए हैं क्वेरी विंडो. ऑलराइट, सो लेट्स से मुझे अपने डेटाबेस में से एक डेटा लेके आना है जहां पे सिटीज, लेट्स से पूरा का पूरा डेटा लेके आना है. सो आई विल जस्ट से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स. ओके, ये जो स्टार वाला है ये सबको पता रहेगा, है ना? कितने लोगों को पता है ये स्टार वाला? व्हाट इज दिस एस्ट्रिक? ओके, किसी ने चैट में बोला है. मेरे पास सिंगल स्क्रीन है तो मैं थोड़ा ओके हाथ ऊपर किया. सो तानाजी, मोनिका, शशिका. ओके, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? चैतन्य. ओके, हाय चैतन्य, आप ड्रॉप हो गए थे या लेट ज्वाइन हुआ आपसे? ओके, कोई बात नहीं है. ऑलराइट, सो हम बोल रहे हैं सिलेक्ट स्टार. स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग. इट्स अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इसके बारे में हम और सीखेंगे. बट देखो सिंपल है ना क्वेरी. सिलेक्ट स्टार, अभी स्टार का मतलब है और कहाँ से करना है? सेल्स टेबल से. तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप? लेट्स से सेल्स टेबल से पूरा डेटा आपको सिलेक्ट करना है तो आप बोलोगे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स टेबल. ऐसे ही बोलोगे ना. सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स. एज सिंपल एज यू नो स्पीकिंग इंग्लिश. अभी देखिए उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं. हम बोलते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, बट सिर्फ वहीं से करो जहां पे जो सिटी है इट इक्वल्स टू सिटी कॉल्ड सियाटल. अभी सियाटल देखो एक सिटी है यूएस की. ओके, काफी ब्यूटीफुल सिटी है. मैं एक बार जा चुका हूं वहां पे. हमेशा बारिश रहती है. ओके, सो ये जो है अगर जो आप देखोगे यहाँ पे जो सिटी आई है इज ओनली सियाटल. ऑलराइट, जो ब्लैंक दिखाता है वो एक्सेस का इशू है. हर बार वहां पे एक ब्लैंक रो रहता है एंड में, which has no IDs but it shows always. Okay, so we got all the data where city is Seattle. So it is as easy as speaking English. Correct? क्या लग रहा है आपको? आसान लग रहा है? Yes. है ना? Right. Okay. Yes. चलो थोड़ा और इसके अंदर हम डालते हैं. Right? अभी लेट्स से मुझे सिटी सियाटल चाहिए या फिर कोई और सिटी हम देखते हैं. लेट्स से मैं सिलेक्ट ऑल पे चलाता हूँ इसको.
और देखिए यहाँ पे सिटी कौन सी है, एक है जैक्सन, देख लेते हैं, सियाटल और जैक्सन। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे SQL क्वेरी में जाऊँगा, यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा वेयर सिटी इक्वल्स टू सियाटल, और अभी देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, सिटी एक तो सियाटल होनी चाहिए और यहाँ पे फिर से सिटी लिखना है इक्वल्स टू जैक्सन। ओके, देखो इसको भी हम रन करते हैं तो हमारे पास में सियाटल और जैक्सन का डेटा आ जाएगा। अगर जो मैं आपको ड्रॉप डाउन दिखा तो यहाँ पे सियाटल और जैक्सन दोनों हमें दिखाई देंगे। आसान है अभी भी, वेरी इजी राइट। ओके, देखिए कुछ भी नहीं है, जैसे कि VB अगर जो किसी ने सीखा है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, यू हैव लॉट ऑफ सिंटैक्स टू फॉलो, यहाँ पे काफी आसान होता है। ऑलराइट, लेट्स से हमें कुछ So here I have a question. So when we say all, so it means that this or that. But why are we getting both the result, both the city result? ओके, जब हम और बोलते हैं, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। ओके, और एंड लॉजिक। सो मैं एक नोटपैड खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, सो दो टाइप के लॉजिक होते हैं, और एंड। ओके, और लॉजिक में क्या होता है, इधर और, जैसा आपने सही कहा वैसे। ओके, या फिर बोथ। सो देखो इसके अंदर ट्रू या फॉल्स लॉजिक लगता है। ओके, आपको ट्रू या फॉल्स लेके आना होता है और उसका डेटा वो रिटर्न करता है। तो हमने क्या दिया था कि सिटी इक्वल्स टू सियाटल, और यहां पे लिखा था और सिटी इक्वल्स टू जैक्सन। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि दोनों क्यों मिला हमें। सो लेट्स से किसने पूछा था क्वेश्चन, सॉरी मेरे पास अभी एक ही स्क्रीन है तो मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन किससे? मोनिका। मोनिका, लेट्स से अगर जो मैं भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि टेल द नेम ऑफ आवर इंस्टीट्यूट एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू आइदर मोनिका और तानाजी, सो अभी आंसर कौन करेगा? शशांक का हाथ ऊपर है, शशिकांत, सॉरी शशिकांत, आपको कोई क्वेश्चन है क्या? ओके, आंसर के लिए ऊपर था। ओके, सो हम लोग अभी एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोनिका का क्वेश्चन था कि और दिया हमने सियाटल और जैक्सन, देन व्हाई बोथ के। सो अगर जो अभी हम लोग एक वर्चुअल क्लास में बैठे हुए हैं और मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि FCKS का फुल फॉर्म क्या है, आइदर तानाजी और मोनिका कैन आंसर। ओके, सो क्या होगा? ओके, दोनों को पता नहीं कि कौन आंसर करने वाला है, दोनों अनम्यूट करके आंसर कर देंगे। करेक्ट? उसी तरीके से यहाँ पे होता है, हमने बोला सिटी आइदर सियाटल और जैक्सन, सो इसका रिजल्ट भी आपको ट्रू मिलेगा जहां पे रोज में सिटी सियाटल है, और इसका भी आपको ट्रू मिलेगा। और SQL क्या करेगा, जहां पे ये दो, जहां पे ट्रू मिल रहा है वो रोज आपको रिटर्न कर देगा। सो इस तरीके से ये काम करता है। ओके, अगर जो आपने एंड यूज किया होता और हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिटी इक्वल्स टू सियाटल एंड सिटी इक्वल्स टू जैक्सन, सो रिजल्ट क्या आता, कोई बता सकता है? Both the cities. Data for both the cities it would have shown. Okay. Which is not possible because city can either be Seattle or Jackson. कोई डेटा नहीं आता। वेरी गुड आंसर। ये किसने आंसर दिया था? शशिकांत। ओके, वेरी गुड आंसर। बिकॉज एक सिटी में देयर कैन बी आइदर सियाटल और जैक्सन, बोथ इज नॉट पॉसिबल, राइट? सिटी एक ही हो सकती है, सिटी के दो नाम हो सकते हैं क्या? मतलब डेटाबेस में तो नहीं हो सकते, ओरिजिनल में आप बोल लो रहेंगे, बट ओरिजिनली डेटाबेस सिटी फील्ड हैव ओनली वन वैल्यू, राइट? सो इट कैन बी आइदर जैक्सन और सियाटल। ओके, सो जब आप और यूज करते हो, सो जहां पे भी वो क्राइटेरिया मैच होता है वो आपको मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई विल गिव यू वन मोर सिंपल एग्जाम्पल। लेट्स से यू गो एंड ऑर्डर फूड एंड यू से दैट हे गिव मी बर्गर और फ्राइज। सो वेटर आपको क्या पूछेगा? अपने वेटर को बोला बर्गर और नहीं है हिंदी में, नहीं इंग्लिश में, और फ्राइज लेके आ जाओ, फ्रेंच फ्राइज। सो क्या बोलेगा वेटर आपको?
दोनों में से कौन सा चाहिए, राइट? वेटर विल आस्क यू what do you mean, or tell me which one you want, right? So if you say or, basically it means both. Okay, you can add more here, Seattle or Jackson or Springfield and so on. Monica, makes sense? Yes, so here when we are saying like both, so at that time we can use in, right? Yes, we can use in, but Yeah. in should be used when you have more than one. I mean, more than two. Okay, okay. Otherwise, doesn't make sense. And here is the interesting thing with or, right? Let's look at all the data again. Okay, I'm just going to remove this and run this. Let's say segment is corporate. Okay, so here is the interesting thing that will happen. So I go to SQL view. I'll say where city equals to Jackson, or what was the field that we looked at? Corporate segment. Segment, right? Segment equals to corporate. Let's try to run this. What will happen? What did you get here? What do you think? क्या मिला है हमें? It will show the cities related to corporate segment. All the corporate, okay? और दो चीजें होगी इसके अंदर, एक तो सेगमेंट कॉर्पोरेट होगा, सिटी कोई भी चलेगी, या फिर सिटी जैक्सन होगा, सेगमेंट कोई भी चलेगा. Okay, this is how you can use SQL. Right now, once we start learning this, you'll see more practical example where this is used, right? When and why this should be used. So those questions, where, when and why, will answer as we start learning. Okay, but just out of curiosity, can anybody give me an example कि इस तरीके की क्वेरी कहाँ पे यूज होगी जहाँ पे हमें either this from this field or that from that field यूज करना पड़ेगा? So देखो यहाँ पे दो डिफरेंट फील्ड है ना, सिटी और सेगमेंट. सो कोई सोच सकता है ऐसा एग्जांपल जहां पे उनको ये यूज करना पड़ेगा? Can you repeat the question, sir, please? So you see a query on the screen, right? That is referring to values from two different two different columns. Okay, city column, either city column should be Jackson or segment can be corporate. Can you think about a scenario where such a query will be used? So ideally, you can use for the filter option. If you want to any filter on the attack data, if you want to share the any particular data for any audience, so you can apply this query for that purpose. I think so. Okay, very good. Yeah, filtering के लिए use होता है. I'll give you one example. Let's say we have a list of students and they are all fresher applying for a job. Okay, so we can actually look at not a fresher, just say students or experienced people also, some applicants. So how do you filter it? You can either say that okay, they should have a degree in computer or experience in SQL. So experience is a different column and education is a different column, है ना? So वहाँ पे और example आ जाएगा. So ऐसा काफी बार होता है where you have to do this. Alright, especially for filtering the data. Okay, any more question? Should we look at one of the more examples? So in this case we use and, will it work? Sorry, can we use And and. So will it work okay, in this so case? in this case it will work, but good question. Yes, it will. What the result you will get here? What do you think? Anyone can answer. Not only Monica, anyone can answer. What will be the answer here? Where both the conditions match. जहां पे दोनों सिटी भी जैक्सन है और सेगमेंट भी कॉर्पोरेट है ना, तो ये आएगा. दोनों मैच होना चाहिए. अगर जो हम और करते हैं तो दोनों में से एक मैच होना चाहिए, रो वाला रो आ जाएगा. सो अगर जो आपको इसको और अच्छे तरीके से समझना है मोनिका, सो ये देखिए यहाँ पे अगर जो मैं ये रो पे हूँ, यहाँ पे लेट्स से कोई जैक्सन वाला रो देखते हैं हम अभी. देखिए ये वाला रो है, फॉर एग्जांपल दिस रो. अभी अगर जो मेरी क्वेरी में लिखा हुआ है
Okay, segment is equal to corporate and city is equal to Jackson. So this will definitely match if I say and. If I say segment is equal to consumer and city is equal to Jackson, this will still match because यहाँ पे अगर जो और कंडीशन यूज करते हैं हम बोलते हैं कि भैया आपका जो सेगमेंट है कैन बी कंज्यूमर और सिटी कैन बी जैक्सन. So all the segment where there is consumer, that row will get true flag, and all the city where there is Jackson, it will get true false, irrespective of combination. Okay, so when you use and, you are referring to a combination. Okay, and when you use and, you're using a singular one. Okay, this is a combination. Both has to be there, and here is either of it matches, that row is selected. Make sense? Yes. Okay, It's very much clear. Yeah. Okay, SQL is nothing but a row selection. Alright. Okay, so row selection हमने देख लिया. थोड़ा हम अलग करते हैं. हम लेट्स से सम करके देखते हैं. अभी सम बोलेंगे यहाँ पे select sum. किस चीज का? सेल्स है हमारे पास में, तो सेल्स का सम कर लेंगे ना, ऑफ सेल्स. ओके, फ्रॉम सेल्स. अभी देखो यहाँ पे तो सेम है. आप बोलोगे यहाँ पे टेबल का नाम भी सेल्स है और फील्ड का नाम भी सेल्स है, तो कैसे पता चलेगा? पता तो चल गया. देखो यहाँ पे आ गया ना टोटल सेल्स का. बट देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, एक्सप्रेशन 1000. सो इसको हम नाम दे देते हैं. बोलेंगे इसका जो सम है सेल्स, इसको एज टोटल सेल्स आप बोलो. सो देखो यहाँ पे जो हेडर लिख के आएगा टोटल सेल्स, बट दिस अ सिंगल नंबर. ओके, इसका कोई मतलब नहीं बनता है. तो हम क्या करें इसको? ओके, सो हम लेट्स से इसको ट्राई करते हैं कुछ अलग तरीके से. विल जस्ट से सिलेक्ट सेल्स एज टोटल सेल्स, कॉमा, select segment from cells, and then group by, okay, segment, और इसको रन करते हैं. तो देखो बाय सेगमेंट हमारे पास में टोटल सेल्स आ गया. अब मैं चाहता हूं कि सेगमेंट पहले आए, तो क्या करना है? सेगमेंट उठाना है, कंट्रोल एक्स करना है, उसको पहले रखना है और रन करना है. सेगमेंट पहले आ जाएगा. है ना आसान? देखो एक बार क्वेरी को देखो आप लोग. सो वी आर सेइंग सिलेक्ट सेगमेंट. सेगमेंट को सिलेक्ट करो और सम ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करो, उसका नाम दे दो टोटल सेल्स. कहां से सिलेक्ट करो? सेल्स टेबल से. फिर क्या करो? सेगमेंट से ग्रुप करो. तो देखो इसके अंदर 3-4 चीजें, तो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं हम लोग. फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नेम आता है, तो इसके बाद में ग्रुप बाय करना है. अब इसको हम रन करते हैं. अब इसको रन करके देखो यहाँ पे जो ये है सेगमेंट के हिसाब से सॉर्टेड है. मैं चाहता हूँ कि टोटल सेल्स के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, तो यहाँ पे और हम लिख सकते हैं कि भैया ऑर्डर बाय, और लिखते हैं टोटल सेल्स. देखो यहाँ पे सम ऑफ सेल्स हम नहीं लिख रहे, टोटल सेल्स लिख रहे हैं. देखो रन करते हैं. टोटल सेल्स क्या है पूछ रहा है. ओके भैया, तो हमें सम ऑफ सेल्स लिखना पड़ेगा. सो ये 2-3 चीजें ना अलग होती है बेस्ड ऑन दी डेटाबेस यू आर यूजिंग. तो देखो अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया टोटल सेल्स जो है उसके हिसाब से. राइट, सो दिस इज वन ऑफ द मैथमेटिकल और कैलकुलेशन एग्जांपल दैट वी कैन यूज इन SQL. क्वेश्चन सो फार? अच्छा, इसको अगर जो असेंडिंग था डिसेंडिंग करना है, तो यहाँ पे सिर्फ DSC लिखना है, डिसेंडिंग का शॉर्ट फॉर्म. रन करो, उल्टा हो जाएगा, है ना. अगर जो हम इसको चाहिए लेट्स से कस्टमर नेम से करें, तो यहाँ पे सेगमेंट की जगह हमें डालना पड़ेगा कस्टमर नेम, और यहाँ पे भी डालना पड़ेगा कस्टमर नेम. रन करते हैं, कस्टमर नेम आ जाता है. अब बहुत ज़्यादा है कस्टमर नेम, है ना. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे मत करो, टॉप 10 करो, और रन करेंगे तो टॉप 10 हमारे पास में आ जाएगा. ऑलराइट, सो दिस जस्ट अ शॉर्ट डेमो. ये वाला पार्ट हो सकता है अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, एंड दैट्स ओके, बट दिस इज हाउ सिंपल द SQL लैंग्वेज इज. ऑलराइट, एनी क्वेश्चन? दिस इज द लास्ट क्वेरी आई एम शोइंग टुडे. ओके, बाद में हम शुरू करेंगे ताकि आप लोग कर पाओ.
सो फ्लो कैसे रहेगा मैं बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक क्वेरी बना के दूंगा, बना के दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे रन होता है, उसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा। उसके बाद आप लोग खुद ट्राई करोगे, ओके, अपने खुद के कंप्यूटर पे, और मुझे बताओगे कि रिजल्ट आया और मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जो आपको चैलेंज आ रहा है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो। वर्चुअल करने में ये एक फायदा हो सकता है कि मैं आपकी स्क्रीन डायरेक्टली देख सकता हूँ। अगर जब हम क्लासरूम में होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, हाउ टू वॉक टू द डेस्क, तो उसके अंदर काफ़ी सारा आपका समय चला जाता है। तो वो सब चीज़ें होती है, यहाँ पे वो नहीं होती है। आप क्विकली स्क्रीन शेयर कर सकते हो और देख सकते हो। दूसरी चीज़, एक और फायदा होता है वर्चुअल में आपको, कि जब आप अपनी क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है, जैसे लेट्स से चैतन्य को कोई इश्यू आ गया, चैतन्य ने अपनी स्क्रीन शेयर की और हमने सॉल्व किया, तो सिर्फ मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, मेरे साथ आप लोग सब भी देख सकते हो, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लोग को सेम क्वेरी होगी तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाती है। तो क्लासरूम के कंपैरिजन में ये एक फायदा होता है कि वर्चुअल में जो क्वेरीज है वो सबको बराबर देखने मिलती है। क्लासरूम में क्या होता था, मैं क्लासरूम में पढ़ा था पहले, सो लेट्स से अहमद को कोई क्वेरी आई तो मैं अहमद के पास जाऊंगा, उसको वहीं के वहीं बता दूंगा, हर कोई उसको समझ नहीं पाएगा उतने आसानी से। भले ही फिर मैं आके बताता हूँ बट हर कोई उसको समझ नहीं पाएगा। ऑनलाइन में वो एक फायदा हो जाता है। ओके, ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? Sir, I have a question. हाँ बोलिए। So, SQL is all about DDL, DML, and DQL, or apart from that, as you told in the beginning, view, stored procedures. That part, is it very complicated, complex, or mostly it is structured around DDL, DML, and DQL? See, some of things will be complex, okay, but I am here to help you and make it simpler for you. All right. Even in DDML, DML, DDL, and DQL, there are things which are complex. सरफेसली अगर जो मैंने आपको जो अभी दिखाया वो आसान लगता है, बट काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी कॉम्प्लेक्स है। बट उसके लिए तो हमने क्लास ज्वाइन किया है, राइट? उसी की वजह से आप समझ पाओगे। सो डोंट वरी अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट। दिस इज अ मास्टरी कोर्स, so we will make sure that even the complex things are simply understandable and you are able to understand it. So after end of the class you'll be able to understand no matter how complex it is. Okay, CTAS complex हो सकता है, UDF काफी complex हो सकते हैं, but then that's why you are joining the class, right? Any more Yes. question? I see few more people get unmuted. Any questions? So, which database are we going to use for practice? Is it MySQL or SQL Developer? We'll do all three. We'll do Access, MySQL, SQL Server. SQL Server is Microsoft, MySQL is it was open source, now it is Oracle, and Access is again Microsoft. So these are three we'll focus on. These are most used one. And if you have query about any certain, you can bring it up. You can do that also. I'm going to introduce a different online tool which can allow you to manage query in any of these language. Okay. Okay, so no matter which SQL platform you're going to use, you'll still find it at least 99% similar. All right. Yep. Okay, perfect. Any other question from anyone else? So, are we going to get the recorded thing if in case if we miss any session? Very good question. So we avoid recording because what happens is we tried doing recording in past. We only record the demo session. People rely a lot on recording rather than actually joining the class, which actually deteriorates the level of education they get or level of understanding they have. Recording is not interactive and you'll not be able to understand most of the time from the recordings itself, right? So we avoid recording. However, there are areas when you're not able to join or there are some certain scenario, we can certainly consider some or other ways. Mostly what we can do for you if you're missing one of the classes, we'll have a revision every time. Okay, every class will have a revision. First 15 to 30 minutes there will be a revision. You'll receive notes,
So if you're not able to join, you'll definitely be able to cover it through that. If you're missing more than one classes, even if there is recording, it will not be very helpful for you. So what we do is we allow you to sit in next class free of cost. So if you missed, let's say 5 classes, 6 classes, you can still cover those in the next class. And as I said, everything we do will do through example. So it is, even if you miss one class, the next day you'll not find that you're not able to understand something because you missed that class. It will be a new example. Okay. And what is the difference between example and sequential learning, right? Sequential learning में क्या होता है, आज आपको लेट्स से मैंने सिलेक्ट सिखा दिया, ओके, कल फिर सिलेक्ट नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा आपके पास में। आज मैंने लेट्स से आपको सीटी सिखा दिया, कल कुछ और आ जाएगा। एग्जाम्पल्स में क्या होता है, एग्जाम्पल इज लाइक एन एंटायर डिश। सो उसके अंदर आपको जो भी लगता है, जो भी सिलेक्ट लगता है, ऑर्डरिंग लगता है, ग्रुपिंग लगता है, सीटी लगता है, एवरीथिंग दैट यू नीड विल कम थ्रू इट। ओके, मेक सेंस मोनिका? Yes, so we are gonna get some material, right? Yes, you're going to get the examples Yes. and the queries that we run in class. Yes. Okay. Okay. All right. Good question. Anybody else? Okay, I mean, we are we going? Sorry, are we going to get this PPT as well? Sorry, Chandra, you'll need to repeat that question for me, please. Am I audible now? Yeah, you are better now. Yes. Yeah. So what I was asking is that are we going to get this PPT, intro PPT? Oh yeah, you'll get that one. No worries about it. But it includes nothing, to be honest. You'll get much So, more so course. it's just to the like it's just a path I can understand, but I was just asking, are we going Yeah, to yeah, get you'll get everything that we covered in the class, including the demo PPT. Don't worry about it. cool? All right. Okay. Anything else? So are we gonna have any test kind of thing, I mean monthly or after once we are done with the course? Yeah, let's go to that. I'll tell you what will happen and what all will happen, how the sequence is. Okay, here are the next steps. Okay, first you need to complete registration, payment, and other things. Then what you need to do is attend exam 9 a.m. to 12 p.m. every Sunday, only once. Okay, you learn more than 100 practical examples. After that, there will be exam. Exam will be free of cost, and you'll be provided a certification from FCKS. Okay, so yes, there is an exam at the end of the class. It will be a practical exam. So you'll actually ask to perform some tasks, and you'll need to perform those and send queries to me, and then it will be evaluated. Uh, then of course there is joining query group and learning through new example. I talked about it. You can reach out to me if you need any kind of guidance during the class or after the class about your career, and not only the course but other guidance also. And after you get certified, or even before you get certified, start implementing what you learn and start applying for the dream jobs or the jobs that you're looking for, and keep learning. So Monica, to answer your question, yes, there is an exam. Yeah, but I was having one more question. I think like we don't like yeah, I mean I yeah. Like we have Microsoft certification once we complete the like Excel and all the stuff. Do you have something like this? There are multiple SQL certifications. The problem with SQL is like Excel, or if you talk about Excel, Excel has certification, Power BI has certification because they are the product certification. Yeah, As I that's said, the SQL is not a product; it is a language, right? So there are multiple certification in market, and you can pick up any one. At the end of the class, I'll recommend few, yeah. uh, Okay. and you can go So, ahead so and take those yeah, on the that's note. what Yeah, I'm looking for such certification which can add value. yeah, which will have market value. At least Because there are if too many, so we need to be very careful which we select. yeah, that's right. That's right. No Yeah. problem. You can just suggest. I mean, this thing. Yes, yes. And I will like recommend. in like that MSP certification, we were having one class for like that to guidance and material was provided.
So if Yeah. you have, I mean, I know like there are lots of many. So For this one, it will be difficult to hmm, come to a conclusion of a single certificate. But hmm, at the end of the class, if all students decide that hey, this is the certificate we want to go, then I can hmm. definitely help you with guidance on that certificate. Yeah, please. I mean, if even don't, if even all people doesn't go like for the certification, I would like to, I mean, get guidance from you, please. Absolutely, absolutely, we can. Yeah, thanks. Yeah, good questions. Yeah, I have one more last question. So what I remember is that we are gonna have sessions Sundays. Yes, So this will be what if we have like any questions in the week, then whom to reach out to? me only. Okay. Yeah, So you can you reach out to will me. be there available even on weekdays. Yes, yes, absolutely. You can reach out to me through call or WhatsApp. There will be a group created in WhatsApp and you can post your queries there as well. Or you can call me also. Okay? Yep, sounds good. Thank you. Perfect. And hopefully that's not the last question, Monica. Please come in. You're asking really good question. Anybody else any questions? All right, let me go back and do a quick round table with everyone. Uh, Prachi, you joined a little bit late. Do you have any question? No, sir. Okay. Amit? Rakesh, sorry to interrupt. I Go was ahead. having one more question. I mean, Yeah, yeah. the Go class will ahead. be for how many like weeks or months? It is So like, approximately I three mean, months. approximately that is what. Yeah, approximately 3 months, but then it's based on how soon you are able to understand, or if we have some breaks, or some of you come up with some exciting examples that we'll cover. So it all depends about on you. I don't I mean, have here and any there, restriction on how many here days. and there, 3 months, like more Yeah. than 1 or 2 weeks less or more. Most probably there will be more only. I mean, like So there we are many we chances. say 4 months. Usually it goes between 3.5 months to 4.5 months. Okay, okay. So 15 days here and there, Yeah. based on some holidays, or sometimes some student come with some amazing queries and we spend entire week on it. So something like that. So So I would that's say that's 3.5 months to 4.5 months. yeah, that's fine because I was supposed to plan few things as well, so that's why I had asked you. No worries, no worries. Anybody else? Any other questions? Yeah, I mean, one more question. So, what is the percentage of theory and practical here? I mean, how much it will be theory and how much it will be practical? What do you mean by theory? Like books and all? Yep. Like essays? No, zero. Oh, okay. Zero essays. There would be probably a couple of diagrams and PPTs to help you understand the structure of databases, but that's all. Otherwise, it is 100% practical only. Oh, okay. Yeah. Any other questions? Anyone? Amit? As of now, I don't have any questions, sir. All right. Now where is Chaitanya? Ganesh? Jalinder? No, sir. Okay. Monica, more questions? No, I'm good. Thank you. Thanks a lot for making this session interactive, Monica. Prachi, you said you don't know question, right? Okay. Punjan, Rupali, Yeah, no questions for No, now. sir. okay. Shashikant, No questions. Silva, कोई क्वेश्चन है आपको? No. Okay. All right. So we can stop here. Here are the next step. As I said, please take a screenshot of this part if you can, because we're gonna start class from next Sunday, which is okay. Where's the calendar? All right. Which is 20.
which is 2nd of June. Okay, make sure that you complete the registration process. You can choose any of the option. Okay, you can choose on time payment, one time payment. It should be one time payment, my bad. Okay, you can choose one time payment or you can choose the installment option as well, but make sure you register before starting the class, that is by 2nd of June, so you don't have any interruption and there's no issues with your registration. All right, payment methods are mentioned. Use one of them, and if you have any question, I'm going to just put my number in the chat window, so you can reach out to me as well. All right, after the class end this will go away, so make sure you make a note of it right now. All right, okay everyone, if you don't have any question, thanks a lot for joining and I'll let you all go. All right, Sir, where will we get the recording this one? this will be published on YouTube in few days only, Amit. Okay, probably It will by be published. tomorrow or so on. It will be published in the group or where we can No, find it. in a YouTube it will be published and the link will be sent to you. So there will be a reminder coming to you with the link and registration. Fine. Okay, once you register, then only you are added to the group. There are already few people who are in SQL group, because I think they have already registered. I guess Sulpa, you are there. There's a few more people. I'll send them link in the group directly.